Hello, good evening and assalamu alaikum. You're watching Sports Tonight. मैं हूँ रोहा नदीम and we are back with another fresh episode. This one's going to be a football special. जैसे कि आप जानते हैं वीकली हम अभी प्रीमियर लीग के ऊपर अपनी एनालिसिस लेकर आते हैं, थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं and not much has changed since the last time we did an EPL episode. In fact, things look like, as far as the table is concerned, they look like they're gonna stay that way for a while. Of course, अब Christmas break भी है, we all know what that means, and all the teams right now so far have displayed some phenomenal football. But आज का focus will of course remain on the top four and of course the title race as it's shaping up. उसके अलावा हम bottom teams के बारे में भी बात करेंगे और जो middle table में जो टीम्स हैं जो कि स्लीपिंग जाइंट्स जिनको कहते हैं या एनी टाइम वी कैन एक्सपेक्ट अ सरप्राइज फॉर देम, बहुत नेक टू नेक वहाँ पे भी चल रहा है. सो वी विल बी टेकिंग अ लुक एट दैट एज वेल. बट बिफोर वी डू ऑल ऑफ दैट, अ क्विक लुक एट न्यूज़ हेडलाइंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. Former world champion Anthony Joshua reminded the boxing world of his power with a comprehensive sixth-round knockout of Jake Paul on Friday night. South Africa's Jaden Shaper secured back-to-back DP World Tour titles, chipping in for Eagle on the second playoff hole to win the Afrasiab Bank Mauritius Open. Three-time Grand Slam champion Stan Wawrinka has officially announced that the 2026 season will be his last on the professional tour. The 40-year-old Swiss icon, known for his legendary one-handed backhand, shared the news via social media, stating he wanted the final year to say goodbye to his fans. Victor Gyökeres secured the decisive goal as Arsenal edged out Everton 1-0 at Goodison Park. The victory, combined with results elsewhere, sees the Gunners return to the top of the Premier League table. Erling Haaland continued his historic form, scoring twice in a 3-0 victory over West Ham at the Etihad. The brace takes Haaland to 104 Premier League goals. Kylian Mbappe celebrated his 27th birthday by matching Cristiano Ronaldo's club record of 59 goals in a calendar year during Real Madrid's 2-0 win over Sevilla. Nick Kyrgios is set for a professional return after receiving a wild card for next month's Brisbane International. Hosts Morocco began their title quest with a 2-0 victory over Comoros in Rabat. There's no doubt that Kylian Mbappe was going to take. जी, this was a roundup of what's happening in the sports world. हमने अपने बिल्डअप में भी ये बात की थी कि आज प्रीमियर लीग के ऊपर, because it's a very interesting and important critical period in this season, we will be talking about which clubs are making the most headlines and what we can expect from the upcoming fixtures. All of this coming on the other side of the short break. Keep watching Sports Tonight. जी, वेलकम बैक. यूर वाचिंग स्पोर्ट्स टुनाइट एंड दिस इज़ द फुटबॉल स्पेशल. ईपीएल एपिसोड है तो ऑफ कोर्स आज बहुत सारी बातें हैं. हमेशा मुझे ऐसा लगता है जब भी हम ईपीएल का एपिसोड करते हैं हमारे पास कंटेंट इतना होता है, देयर आर सो मेनी टॉकिंग पॉइंट्स बिकॉज देयर इज़ नो डल डे, देयर इज़ नो डल वीक, स्पेशली इस पार्ट ऑफ दिस सीजन जो कि इतना क्रिटिकल है फॉर ऑल द टीम्स. द टाइटल रेस इज़ शेपिंग अप एंड इट्स प्रिटी नेक टू नेक. चाहे आप टॉप ऑफ द टेबल की बात करें, मिडल ऑफ द टेबल की बात करें, ऑल टीम्स आर ट्राइंग देयर एब्सोल्यूट बेस्ट टू रियली गेट दोस मैक्सिमम पॉइंट्स गोइंग फॉरवर्ड. हमारे जो रेगुलर्स हैं उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया हुआ है तो उनसे बात करते हैं अबाउट व्हाट दिस क्रिसमस पीरियड ब्रेक इज़ लुकिंग लाइक as far as all the Premier League clubs are concerned. हमारे रेगुलर जी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन आजम is back with us in the studio. Assalamu alaikum Hasan, how are you? Walaikum salam. I'm great, alhamdulillah. Pleasure to make it to 151. 151. ये हमारा भी एपिसोड काउंट चल रहा है. थैंक यू सो मच हसन फॉर जॉइनिंग अस. उनके साथ हमें आज वंस अगेन हमारे फुटबॉल शो में ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हसन कुरैशी साहब ने. अस्सलाम वालेकुम हसन, ग्रेट टू हैव यू एज वेल. Assalamu alaikum Roha ji, great to be part of 151 not out and inshallah looking forward to many more. More to come, more to come. Gentlemen, इंटरेस्टिंग पीरियड है ये इस वक्त प्रीमियर लीग की हम बात करें, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत कुछ नहीं बदला सिंस ऑफ कोर्स द लास्ट एपिसोड दैट वी डिड,
बट ये हमें अब इस्टेब्लिश हो गया है कि क्रिसमस नंबर 1 ये टाइटल अभी इस वक्त कौन अपने हाथ में रख रहा है, वो है आर्सेनल. लुक्स लाइक देयर इज गोइंग टू बी देम. इट हैज़ बिन देम फॉर अ वाइल. आई मीन अगर हम इस सीज़न की बात करें, बट क्रिसमस पीरियड पे नंबर 1 होना, पहले तो ये बताएं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है फॉर क्लब्स. I think it's sort of like a benchmark. एक फेस्टिव पीरियड से उन्होंने एक टाइटल की जो पॉइंट्स पोजीशन है उसको कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ये फेस्टिव पीरियड ब्रिटिश हिस्ट्री का ना एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है कनेक्टेड विद फुटबॉल, बिकॉज फुटबॉल वाज ऑलवेज a working class game for a century. That's how those are the people who supported it, saved their money, used it on the tickets. That's why it's so connected. खास तौर पे हॉलीडे पीरियड में आपकी जितनी फ्रेंचाइजिंग स्पॉन्सरशिप सब ऊपर चला जाता है. तो आप जहाँ पे स्पेन, इटली और आप फ्रेंच लीग्स में देखेंगे कि वो विंटर ब्रेक लेते हैं, सबसे बिजी पीरियड इंग्लिश प्रीमियर लीग में ये वाला होता है, बिकॉज दे वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स. आई गेस दैट्स पार्ट ऑफ द रीजंस व्हाई you see EPL so dominant around the world in terms of its branding, but this is one of the reasons. And secondly, ये इतने quick fixtures इतनी जल्दी आपको manage करने पड़ते हैं कि जो कह लें कि इस busy period से बाहर निकल के अभी भी top पे होता है, तो more or less they have the opportunity to win the league. And हम आर्सेनल की बात करें, they're not new to this Christmas number 1 feeling. They have done this 4 times before. They have done it for the 5th time कि वो 25th December close कर रहे हैं being the table toppers. लेकिन बात अब ये है, सवाल अब ये है कि can they take it further? Because अगर हम उनके रिजल्ट की बात करें against Everton, points are points, crucial points, and of course उनकी पोजीशन जो है वो solidify तो ज़रूर हुई है, but ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि हम कहें कि wow it's brand new from Arsenal कि वो नंबर 1 पर है. So Roha ji, देखें, football fans and football players and managers tend to be very superstitious. Especially omens is a very big thing. Players look at the past and people look at. I think cricket में भी जितना बिल्कुल, 92 वाले jokes जितने पाकिस्तानी fans करते हैं, I don't think सारा कोई कुछ और होता है. करता But in football it's always like इस सीजन में ये हुआ था पहले. आजकल मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, हमारे पास और कुछ है नहीं, तो हम कहते हैं याद है जब वो कोई 2 मैचेस जीता था तो हम ये हो गया था या वो हो गया था. Problem for Arsenal is every single time they've been top at Christmas, they've never won the league. So will they break with that tradition? In the 33 years of the Premier League, 17 times a team has been top at Christmas and gone on to win that league that year. It's never been Arsenal. Are they going to break that? So right now they'll be happy. I think Hassan made a good point कि festive period के साथ तो जुड़ जाता है. It's almost at the halfway point. If you've managed to remain top of the league for the halfway point, and Arsenal का हल्का सा wobble हुआ था, Everton away was a tough game. Manchester City are doing Manchester City things and breathing down their neck. Chelsea are not too far away. Liverpool are winning games again. So Arsenal पे pressure था. Big game to win. They'd be happy that they're top here right now. I think they'd much prefer to be top in March. But this is a good base from which to build for that. That's how they have to see it. And how do you see the Everton result? Of course, थोड़ा ज़्यादा करीब या neck to neck आपको लगता है कि ये मैच आ गया था? How? What does it say about Arsenal? Of course, we know कि they're going to be pushing for as many points as they can, and of course, इतना high scoring contest ये नहीं था. What are your thoughts about this result against Everton 1-0 से जो Arsenal ने जीता? I think Arsenal gifted the penalty, to be honest. वो लग रहा था वॉलीबॉल खेल रहे हैं जिस तरह उन्होंने उनके सर के आगे से आके बॉल साइड पे की थी. बट कोई बहुत क्लियर कट चांसेस आर्सेनल ने नहीं बनाए. एक चीज़ की मुझे एवर्टन नेवर लुक लाइक विनिंग द गेम, टू बी ऑनेस्ट. आप रीप्ले में भी देख सकेंगे कि बिल्कुल उनके सर के आगे वॉलीबॉल से जिस तरह आप खेल रहे होते हो ना, वो वाला वो है. ग्योकेरेश 19th पेनल्टी सिंस 22-23 सीजन और 19 कंसेक्यूटिव पेनल्टीज उन्होंने स्कोर की हैं, तो दैट्स समथिंग गोइंग फॉर हिम. 97 गोल किए थे ग्योकेरेश ने अपनी टीम के लिए भी, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग ऑप्शंस आर्सेनल के पास बहुत ज़्यादा बंदे मौजूद हैं. इनफैक्ट इस वीकेंड पे रोहा जी मैं देख रहा था कि सबसे ज़्यादा गोल स्कोरिंग ऑप्शंस इनके बेंच पे थे. गैब्रियल खसूस वापस आ चुके हैं मेडुएके, एजे, ऑल ऑफ देम वर ऑन द बेंच, एंड हैवर्ट्ज इज गोना कम बैक एज वेल. सो इट्स नॉट दैट फार. तो आपके पास इतने ज़्यादा अटैकिंग ऑप्शंस हैं. अभी तक जिस तरह की स्ट्राइकर का वो आउटपुट चाह रहे थे फ्रॉम हिम, वो उन्हें नहीं मिला. तो इन टर्म्स ऑफ द वेज they score goals, I think it's still reliant on a lot of what they used to do. I still feel like Arsenal can go to another gear in terms of goal scoring, but right now in terms of squad depth and the way they seem to be managing this, they're right up there.
जो कह रहे हैं कि आपने बात की, डू यू थिंक ही कैन बी दैट एक्स फैक्टर जो कि जो उनकी प्रीवियस टाइटल चार्जेस थे उसमें शायद मिसिंग था, मे बी नाउ ही इज कमिंग इन, इज प्रोवाइडिंग दैट एक्स फैक्टर? Raji, there's a lot of short-termism in football. The thing is, he is new to this league. He's new to this level. He's wearing the shirt number of a man who himself needed a couple of seasons before he exploded, Thierry Henry, and then went on to become Arsenal's greatest player of the modern era. So, abhi wo pressure un pe expect karna, yes, he himself will want to do better, but people are saying he's not the finished product yet. I don't think he needs to be. And Hassan makes a good point कि उनके पास वो depth अभी है Arsenal के पास कि they can afford for him not to be. The idea was that they're signing Erling Haaland. Erling Haaland is a one-off. Erling Haaland is, you know, not आप हर किसी को उनसे compare नहीं कर सकते. He is an anomaly. I think Gyökeres has all the potential to go on and be a great striker for Arsenal. But this season, if he keeps popping up with goals like this, Hassan mentions 19 consecutive penalties in league football. That's a very important thing. That's almost guaranteeing the points. Everton, tough game to go away and win. As long as Arsenal जीतती रहे, I don't think वो problem होना चाहिए. सारा expectation उन पे डाल देना. I don't think he's quite ready to shoulder that burden yet. No. You make a good point. हम अगर अब थोड़ा सा अब comparison draw करें with Everton's performance, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि narrow defeat था, but ऐसा नहीं था कि they let Arsenal walk away with this game. What will you say about Everton's performance and the grit that they demonstrated? I think definitely उन्होंने एक perseverance show की, even though Iliman Ndiaye उनके जो goal scorer हैं top वो चले गए हैं AFCON में, और Dewsbury Hall वो second top goal scorer है वो भी injured थे. And then in the absence of both of them, you look at somebody like Jack Grealish who's come from Man City to take on the onus to be the leader of the attack, और उस तरह की game हमें उनसे भी नहीं देखने को मिली. तो it was almost like Everton knew this is a game we have to somehow manage. So it was more on the defensive end. That's why Arsenal couldn't score a lot of goals. But it was a very comfortable game for them. And Everton didn't really threaten to score a goal themselves, to be honest. जहाँ पे आपको लगे कि यार कहीं ना कहीं ये points Arsenal से चले ना जाएं, जब Arsenal ने वो lead ले ली थी, they just managed the game from there on. बिल्कुल. अब अगले रिजल्ट के ऊपर आते हैं. अनदर वेरी एक्साइटिंग मैच, लिवरपूल वर्सेस टॉटनहम. 2-1 से जी लिवरपूल ने ये मैच जीता, अपने नाम किया. बट इट वाज एन इंटरेस्टिंग मैच बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस. लेकिन पहले मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगी ऑन द वे एंड द मैनर इन विच लिवरपूल वर एबल टू एग्जीक्यूट दिस. Again, Liverpool they'll be happy, but they'll also keep in mind that playing against 9 men, you somehow, I mean, even though Manchester United played against 10 men, found a way not to win, so maybe Liverpool were paying us a compliment. The problem in this situation was that aap chahte ho against 9 men to have more control. Liverpool did score a goal the first time. Their two very expensive signings, Wirtz and Isaac, link up, but there's a possibility that after that goal, Isaac may have a broken leg and may be out for a very long time. So, usko aap bittersweet keh sakte hain. The thing is that what they did correctly here, Liverpool, to get back to your question, Rohaji, was that they made those moments count. But we also have to be honest, Spurs were abysmal. Even with 11 men, with 10 men, except for the times jab wo aage jaake 9 men pe they somehow found a goal. Spurs have a lot of problems. They do have a lot of problems and we did speak about some of those problems जो कि इस मैच में फिर से हाईलाइट हुई हैं. लेकिन let's first talk about Alexander Isak. Of course एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग साइनिंग पहले तो हुई है, उसके बाद of course इतना उन पे प्रेशर था कि कब वो उस तरह से अपना फुटप्रिंट जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे इस सीजन पे इस क्लब में. एंड नाउ पहले तो ये बताएं, हाउ सीरियस इज द इंजरी लुकिंग लाइक राइट नाउ? कितना नुकसान लिवरपूल को अब इसका हो सकता है? I think it is from a few weeks. It could be up till a few months because उनके lower leg में there could be something broken there as well. So the club's going through the MRIs and scans and all that. और आपको पता है कि वो पहले announce भी नहीं करना चाहते to create any sort of panic for the player, family and the fans itself. तो वो इसको पूरी तरह monitor कर रहे हैं कि कितना ये injury कितनी देर के लिए उन्हें sideline कर देगी. और लगा ऐसे था क्योंकि आइजैक का हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि समर में वो आए किस तरह, ट्रेनिंग कैसे हुई, वो टीम को नहीं ज्वाइन कर पाए. तो अब जाके लग रहा था कि मे बी ही इज़ बैक इनटू द थिक ऑफ थिंग्स और दूसरा गोल लिवरपूल के लिए करना है, नॉट इन नॉट दैट लॉन्ग ऑफ अ पीरियड. एंड टिपिकल आइजैक फिनिश, टिपिकल अक्रॉस द गोलकीपर, एक जो उनकी उन्होंने अपना जिनका नाम मशहूर किया जिन फिनिशेस के ऊपर. So it's sad to see him go, but I think it's also kind of solves a problem for Liverpool itself.
क्योंकि अब उनके पास चॉइस नहीं है. They know Ekitike is the guy, he has to play, and Gakpo will come back on the left wing as well because वो भी थोड़ी सी injury suffer कर रहे थे. तो I think it makes things clear for them, but obviously But of for course, Isaac, it's tough. It's tough. pretty grim right now, and of course Chelsea fans will be pleased कि यहाँ पे थोड़ा सा danger जो है वो offset ज़रूर हुआ है. अब कंटिन्यू करते हैं लिवरपूल की टैक्टिकली भी अगर हम बात करें इस गेम में. डिड यू नोटिस अ शिफ्ट इन द वे दैट दे अप्रोच्ड दिस गेम? इवन इन द लास्ट कपल ऑफ गेम्स हम यही बात कर रहे थे कि आर्ने स्लॉट जो है वो टैक्टिकली कितना फ्लेक्सिबल हो सकते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत प्रेशर उन पे माउंट हो रहा था. इस रिजल्ट के बाद डू यू थिंक लिवरपूल आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ मोर कैलकुलेटेड tactical approach as far as Arne Slot is concerned? Roji, I don't know how much of it is moving towards that. एक तो आप पे चीज़ें force हो जाती हैं, you know, when you lose a player like Isaac, it forces you. Salah's already not there because he's at the African Cup of Nations, and then it's very difficult to judge if a team is doing anything different tactically when they're playing against Spurs. You just have no idea if Spurs are being that bad. Things are all over the place. All over the place. Is the team looking good because they're good, or they're looking good because it's Spurs? The problem, I think there is an element of truth to the more pragmatic approach that Arne Slot is taking. और अब आपको results भी मिल रहे हैं. Suddenly he's finding himself closer back to that top four. That horror run is looking like the past. 2-3 गेमें में और results आ जाए, and Liverpool might be looking back at where they thought they would be in the top 3. So right now I think उनका focus है जैसे भी हो results मिल जाए. The worrying thing would be conceding a goal to 9-man Spurs. When you should have been dominating that game. I think that would have worried him. उसके बाद आपको थोड़ी और pragmatism नज़र आ गई. But that's not necessarily a bad thing right now. जो हम बात करते हैं heavy metal football की, that was always a result or a leftover of the Jurgen Klopp era. एक ही Jurgen Klopp है, everybody cannot be Jurgen Klopp, but Arne Slot has shown enough tactical and system-wise mobility and adaptability to suggest he is, after all, a Premier League winning manager. You cannot take him lightly. That he has what it takes to get Liverpool where they would like to be. And if they keep grinding out results like this, I think they'll be very happy. What are your thoughts on the season the Spurs have had so far? Tactically भी अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा defensive side पे भी चीज़ें expose हुई. Again, as Qureshi साहब said कि things do look a bit all over the place when the Spurs are playing, and lately that's been more visible than before. Yeah. What are your key takeaways? क्या वजह है कि they are unable to find that discipline that's required to go deeper into the season? I think हम अक्सर बात करते हैं डिफेंस और अटैक की ना कि अक्सर साइड मतलब अटैकिंग थर्ड में वो उस तरह चांसेस नहीं बना पा रही होती हैं, उस तरह डिलीवर नहीं कर रही होती, तो दे आर डूइंग वेल डिफेंसिवली. आई थिंक एट द एंड रियलिटी इज कि ये अमेलगमिज्म है दोनों चीज़ों का. अगर आप अटैक अच्छा कर रहे हो तो आप डिफेंड ऑटोमेटिकली अच्छा कर रहे होते हो बिकॉज यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड बैक एज ए टीम. अभी मसला स्पर्स के साथ आ ही ये रहा है. एक तो थॉमस फ्रैंक का पहला सीजन है इस क्लब में, वो एक छोटे क्लब से आए हैं, तो एक छोटे क्लब से आकर टॉटनम जैसे क्लब को संभालना जहां पे आप डोमिनेट कर रहे हो, इट्स नॉट समथिंग ही इज यूज्ड टू बिकॉज नॉर्मली कमिंग फ्रॉम अ स्मॉलर क्लब यू मोर लाइकली आप यू पार्क द बस एंड देन यू बिल्ड ऑन द काउंटर्स एंड ऑल दैट. तो उस तरह के प्लेयर्स उन्होंने खरीदने की कोशिश भी की. चावी सिमंस लिए, कोलोमुआनी लोन पर आए, लेकिन अभी तक उनकी वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है टीम के अंदर. हमें याद रखना होगा अक्टूबर में एक वक्त था कि थर्ड थे, टॉटनम हॉटस्पर वर थर्ड ऑन द टेबल एंड वी वर थिंकिंग लाइक व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट. But then it all falls away and the pressure is completely on Thomas Frank. And I think few key players are missing as well. Kulusevski probably player of the season थे उनके last year भी, जब वो पोचेटिनो के साथ ट्रॉफी भी ले गए. तो इस साल लग रहा है कि ग्लेरिंग वहाँ पे जगहों में मिसेस भी हैं और टैक्टिकली भी I think he himself is adjusting to life at Tottenham right now. अच्छा चलिए पॉइंट्स टेबल पे अब हम इस रिजल्ट का भी अब एक इफेक्ट देख लें. चेल्सी एंड लिवरपूल आर right at the same level as far as the points are concerned. Both these clubs are sitting at 29 points. सिर्फ गोल डिफरेंस है इनके दरमियान और कोई चीज़ इस वक्त इनको सेपरेट नहीं कर रही है. बट यहाँ पे how will Liverpool approach this and how will they see this as a challenge and how can they come up with the kind of games that will take them past Chelsea, because obviously ये वो point है जहाँ पे it's so neck to neck, they cannot just go out for draws or just go out for I think Liverpool still have somewhat of an easier run in, and they have an advantage that Chelsea do seem to find one step forward, 2 steps back.
continuously this season. अगर हम चेल्सी को देखें और वो गेम्स देखें जो उनको जीतनी चाहिए थी, Chelsea should probably be closer to Arsenal than being closer to आप Liverpool. यूनाइटेड की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं सिर्फ चेल्सी की बात कर रहा हूँ. यूनाइटेड की अगर मैं बात करूँ तो फिर ये बहुत लंबा शो हो जाएगा. So I think Liverpool have to see that challenge as their focus has to be get the results on the board, which I think they're capable of. Even missing, players like Isaac and Salah for the upcoming games. And then every win, every result in their favor will increase the confidence. So I think even though Chelsea also have the ability to do it, I think Liverpool have to be targeting third place right now, the way they're going. We're going for a short break here, but when we come back, a series of interesting results to talk about. Don't go anywhere. You're watching Sports Tonight. Ji, welcome back. You are watching Sports Tonight, and this is the EPL special. We're talking about what results excited us over the past week. हमने सिटी की बात अभी करनी स्टार्ट नहीं की. सिटी का जिस तरह से हम सर्च देख रहे हैं to the top of the table, they're there but they're not quite there yet. I mean, Arsenal are holding off the fort right now. लेकिन सिटी की again एक और convincing win हमने देखी against West Ham, a clean sheet win for them, and of course the highlight of the game of the win was Erling Haaland and his double, which takes him to the top of the tally as well. उन्होंने Cristiano Ronaldo को भी overtake कर लिया है on the all-time Premier League scoring list. Your thoughts on how special this match was, how special this man is for this club? Definitely among the greatest strikers to ever play for the league. Absolutely. I think in terms of the match, ये एक routine कह लें कि सिटी परफॉर्मेंस थी. इवन दो आई एम श्योर पेप गार्डियोला बाद में भी कहते रहे कि और भी बेहतर होना होगा सिटी को और होना पड़ेगा अगर उन्हें आर्सेनल को हराना है. बट एक टिपिकल सिटी परफॉर्मेंस थी जहाँ पे उन्होंने पूरे मैच को कंट्रोल किया मोर और लेस. हाँ, वेस्ट हैम को चांसेस और ज़रूर मिले विच दे कुड हैव एक्चुअली पुट अवे एंड पुट सिटी अंडर प्रेशर. बट ये भी हालैंड जिस तरह स्ट्राइक में इन्वॉल्व रहे, अटैक में इन्वॉल्व रहे, रेंडेज ने भी सेकंड गोल किया. एंड इन टर्म्स ऑफ हालैंड, रोहा जी, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि ही विल बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर्स ऑफ ऑल टाइम. और ही इज़ ऑलरेडी प्रूविंग टू शो दैट इफ ही स्टेज फिट, इफ ही कीप्स प्लेइंग एट दैट लेवल. क्योंकि जितनी जल्दी कन्वर्जन जैसे आपने कहा उनकी है कि उन्होंने रोनाल्डो को ऑलरेडी बीट कर दिया. आई थिंक 100 से भी ज़्यादा गेम्स हैं कि वो उनसे जल्दी उन्होंने बीट कर दिया रोनाल्डो को इस मार्क में. इवन दो रोनाल्डो, although at some point it's not a fair comparison, वो एक विंगर शुरू हुए थे और फिर वापस जब आए तब वो एज अ स्ट्राइकर आए थे. In any case, it tells you that this man is on another level completely. And the way he finishes again for this third goal, he's just on another level. And Guardiola knew this. I think the world knew this. जब इनके ऊपर bids चल रही थी, and that's why he changed his system for this guy, and it's working. It's working for him. Your thoughts on City's convincing clean sheet win against West Ham? A great result for City, especially when you're chasing Arsenal. A great result to keep the run going. A very routine City performance. Clean sheet, comfortable win, no problems. But coming back to what Hassan was rightly saying about Haaland, we've seen great strikers in the Premier League over there, and all of them have had one thing or another that helped them stand out. आप अगर टॉप स्कोरर में एलन शेरर को देखें, इट वाज द कंसिस्टेंसी. आप वेन रूनी को देखें, डिडिए ड्रॉगबा को देखें, टेरी ऑनरी को देखें. द थिंग विद हालैंड इज दैट यू फील लाइक ही इज स्टिल गोइंग टू गेट बेटर. You can't really find a weakness in his game. People said he's too left-footed, he's too reliant on the ball in the air. वो right foot से गोल कर रहे हैं, वो along the ground गोल कर रहे हैं, poaching goals कर रहे हैं. He has been the most complete striker in the world for some time now. I think जब उनकी और Mbappe की बात होती है, and I think this is the first of many records. If he stays on at City, which it looks like he will, he has been a difference maker, Rohaji, between them being a great side and them being the incredible side that they've become. I think he's another player like Ronaldo, like Messi, that people will truly appreciate when he's not there anymore. But at such a young age to achieve what he's achieved and taking his country to the World Cup now, I think Erling Haaland is a very, very special player. मापे की आपने बात की, लेकिन मापे उन्होंने भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ओवरटेक कर लिया है. 59 जो है उनके गोल्स इन अ कैलेंडर ईयर जो कि थे. अब यहाँ पे भी रोनाल्डो को जो है वो ओवरटेक कर लिया गया है उधर भी. तो
someone must not be having a good week. That tells you how special Ronaldo was exactly. Zabardast. And it's taken such players to break his दो record. different leagues में उनका दो ही different comparison records. चल रहा है कि रोनाल्डो का record इधर भी उधर भी. Abhi to someone will have to score 100 goals in 3 seasons at Juventus to overtake Ronaldo there. So it's just Wow, it's just that's and the legacy. international record. and the like- international record that he has. So, But talking about Mbappe, as you said, I think पहले सीजन में आके कर देना आई थिंक मस्ट बी वेरी वेरी स्पेशल क्योंकि रोनाल्डो इज द गोट ऑफ रियल मैड्रिड इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग जिस तरह के उन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़े जो उन्होंने चैंपियंस लीग टाइटल जीते ला लीगा टाइटल जीते ही गेव देम टीम दैट एरा वाज डिफाइंड बाय रोनाल्डो as Real Madrid's identity. But I think Mbappe tells you that he was more than the finished product when he arrived, and all these questions about Mbappe left wing पे खेलता है, striker खेलेगा, पता नहीं क्या होगा. It's like this is what's happening, He guys. means Like, business. I think he's shown that now. अभी enough halfway time. through the season है और 2025 में it's like मैं रोनाल्डो का रिकॉर्ड तो गया. yeah. That's how good he is. And it's so exciting to see कि अब आगे what else will be in store. खैर back to Premier League हम बात कर रहे थे Guardiola और उनके standards की कि मतलब इस win के बाद इस result के बाद भी वही बात जो हसन ने की कि they have the Arsenal challenge at the back of their heads and they know कि the game's not sealed yet, the job's not done yet, and that's why Pep is just expecting कि the team has to step up even further now. I think Pep would not be happy if he won 38 games, won every game 10-0 also. He's just driven like that. As a manager, as someone, he's always someone, उनसे किसी किस्म की तारीफ करवाना, अपनी अप्रेज लेना बड़ा मुश्किल काम है. I mean, there are managers who would be, building a statue for Erling Haaland for scoring 2 goals for them like that and scoring the number of goals that he did. I think that's just who he is, and that's what's made City drive their way towards success, setting those standards. And I'll probably sound bitter here, but sometimes it's important to be bitter and say that it's a slipping of standards at clubs like Manchester United when you're no longer looking to set those very high standards that people like Sir Alex Ferguson had set and accepting excuses and all. Pep Guardiola, yes, he's been backed by billions of pounds and whatnot and everything, but when you're winning a game like this and you're still expecting more, that's the sign of an elite manager, that's the sign of an elite club. Absolutely, that's very well said. I think मुझे एक saying याद आ गई क्रश साहब की बात से कि वो he's like famously said कि never get too high and never get too low, whenever always stay in the middle. Yeah. It's like that's his philosophy कि आप जो मर्जी अचीव कर लो या कम भी अपने आप को दरमियान में ही रखो बुरे दिनों में भी. और गॉर्डियोला की स्पेशलिटी ये भी है कि वो जानते हैं कि उनकी स्क्वाड बेंच आर्सेनल वाली नहीं है. इस मैच में उनकी स्क्वाड में सविनियो थे खाली अटैकिंग ऑप्शन जो इज अ रिकग्नाइज्ड अटैकिंग ऑप्शन. अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की 4-5 ऑप्शंस थे आर्सेनल के बाद. दे नो दिस करंट प्लेइंग 11 हैज टू स्टेप अप डे इन डे आउट. तो शायद वो मेंटली तौर पे ना उनको पहले से ही तैयार कर रहे हैं कि तुम ही लोगों ने करना है. बिल्कुल. हम अब बात करते हैं एक और टीम की जो कि जिनकी फॉर्म अभी जो है ना वो थोड़ी फ्री फॉल में लग रही है. वेस्ट हैम के ऊपर थोड़ा सा अगर हम आपका एनालिसिस लें 18th पे देर सिटिंग राइट नाउ. सो रेलेगेशन बैटल तो इस वक्त ऑनगोइंग है, बट क्या आपको लगता है कि अब इस क्लब का यही फ्यूचर है या यही ट्रैक रहने वाला है इस सीजन में? व्हाट आर दे लैकिंग? व्हाट इज द रीजन दैट दे आर sitting at number 18th right now? I think West Ham have also been hurt by the same thing a lot of clubs have been hurt by. They play Manchester United, get a good result and think everything's back to normal. Unfortunately, it's not. The problem is they've been playing very poor football for some time now. They've not been consistent enough other than, of course, that result at Old Trafford. So, वही problem आ जाता है कि they're not seeming to find a way to put it behind them. In a league where one team in Wolves is all but relegated, to be 18th basically means you're 19th right now. And that should be sending alarm bells over there. They have a good enough squad. They have a good enough team. City se to theek hai. Most teams will find a way to not put in that kind of performance and lose to City. It's the other games. It's the games closer to the teams, to them in the table that West Ham have to find a way to start winning. And right now, I think their form is a concern. The fans are not happy. This is an unhappy club at the moment going into Christmas. And if things don't change soon, then I think it might be a record. Nuno Espirito
Santos seems to find ways to keep getting fired in the middle of a season by a number of clubs. So might be a record. I think it'll be the third time it'll happen to him. So he would want to change that for sure. Well, you heard it here first. Yeah. Well, let's move on to another very बहुत multi-dimensional सा game था ये. Newcastle again versus Chelsea. 2 से जी ये game draw हुआ. Chelsea will be pretty. I don't know if pleased is the right word, but relieved for sure कि 2 down से उसके बाद come back करके उन्होंने ये game जो है वो जीता है, which they should have won, and they should have won in a more simpler and straightforward manner. Hassan, your analysis of firstly what happened to Chelsea and then what happened to Chelsea? I think Chelsea were just blown away. I mean, playing at Newcastle is one of the toughest grounds जहाँ पे आपको वे जाके खेलना होता है. इस वक्त एस्टन विला आ रहे थे, न्यूकासल हमेशा ही टफ रहेगा. बहुत तेज स्टार्ट था न्यूकासल की तरफ से. उनके स्ट्राइकर पे पहले ही प्रेशर था कि क्या हमने सही बाय किए नहीं, इनसे गोल्स नहीं हो रहे. तो उनका गोल करने ही ऑलमोस्ट spurred the whole team on, and then they went for it once again. They could have scored at least 2-3 goals more in that first half. और बाद में आपके मरेस्का ने भी कहा कि पहले हाफ में they were so blown away so quickly कि उन्हें लगा कि शायद कोई हमारे पास चांस ही नहीं है. 2-0 up in the first half, could have been 3-0 up, cruising through the game, and then Chelsea come back, which I think shows a lot of character from that character that has been missing from this side. और हम इसकी बार बार बात भी करते रहे हैं कि चेल्सी की अभी एज अ साइड उस मैच्योरिटी में, उस आपके जितनी मुश्किलात को आपने झेलना है, उसके आगे उसको कन्फ्रंट करना है, वो इस यंग साइड अभी सीख रही है. I think this was a testament that they're learning quickly, because being 2-0 down at Newcastle and then coming back to draw the game must be a huge point for them. It is. I think देखें इसमें यहाँ पे भी है कि for Newcastle to be in the position they were in and then to find a way to not win this would be as disappointing as it would be for Chelsea, for whom Reece James remains an integrally important player, a huge player. Newcastle को ज़्यादा disappointment होगी. Chelsea, I think Hassan makes a very good point that they have, showing that they have what it takes. They're showing that ability to go out there and fight the adversity, which is a good sign considering they are missing some important players still. So equally though, I think Newcastle will think to themselves, this is a golden opportunity to make a statement, get a big win at home. न्यूकासल की बात भी अब थोड़ी करते हैं. डोमिनेट किया उन्होंने फर्स्ट हाफ. लुक्ड लाइक वेल दिस कुड गो देयर वे. देयर प्लेइंग एट होम, देयर डोमिनेंट, देयर डोमिनेटिंग द गेम प्रीटी मच. लेकिन उसके बाद दे आर अनएबल टू क्लोज इट आउट, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव failed to do that. What are your analysis of? पहले तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि जिस तरह का स्टार्ट उन्होंने लिया, क्या हो जाता है न्यूकासल को कि क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, फिनिश नहीं कर पा रहे हैं? I think it's just that tentativeness within the league. उसकी वजह ये भी, अगर आप उनके चैंपियंस लीग के रिजल्ट्स देखें इस साल, तो वो अपनी हिस्ट्री में पहली बार 3 कंसेक्यूटिव चैंपियंस लीग की गेम जीते हैं. सो दे आर डूइंग वेल ऑन दैट फ्रंट. काराबाओ कप में भी दे आर गोइंग टू द सेमीफाइनल्स. हालांकि वो कोई उसको कंसिडर नहीं करता, चौथे नंबर पे वो टाइटल आता है, बट स्टिल FA कप वगैरह जो कंपटीशन चल रहा है उनकी तरफ से, आई थिंक देव मेजरली मिस्ड आउट जस्ट टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप ऑफ बिकमिंग एन एलीट क्लब. वो जो सारी साइनिंग्स इस समर वो नहीं कर पाए. आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा उनके एक वो स्टेप अप होने में, क्योंकि जब आप एक कहना होगा कि एक बहुत कोई ख़ास टीम से नहीं, एक नॉर्मल टीम से आप इतना अच्छा कंपटीशन दे रहे होते हैं और आपने आइडेंटिटीज़ बना ली होती हैं, और फिर आपकी टीम का जो मेन मैन है वो भी निकल जाए, who you built your team around, who's your goal scoring main guy, then almost it's like you need to find those places for cover up. जहाँ पे जो क्लब प्लेयर के ऊपर वो हाथ रख रहे थे वो जा रहा था, एकिटीकी के ऊपर वो लिवरपूल ले गई, आइजैक भी लिवरपूल ले गई. I can name so many players. United, yeah. मोएम्बो की बात कर लें, so many players. तो न्यूकासल को कहीं ना कहीं they're missing that quality in the final third, to be very honest. That final third quality for them is missing, and towards the midfield and towards the defense as well. It's almost like Eddie Howe next season, if he somehow stays closer to that Champions League spot, is going to make a lot of changes. चलिए क्लोज करने से पहले चेल्सी के ऊपर एक आखिरी दफ़ा बात करना चाहूँगी कि of course we know Liverpool and Chelsea are neck to neck right now. They are at the same level of points. 4th and 5th बड़ा इंटरेस्टिंग ये बैटल होता है, ये भी जो हम मिडिल में देख रहे होते हैं या इस फेज ऑफ द टेबल में देख रहे होते हैं. लिवरपूल के फ्यूचर के बारे में आपने बताया, अब चेल्सी के बारे में थोड़ा बताएं. व्हाट शुड देयर टैक्टिक्स
look like going forward, knowing Chelsea and knowing कि उनके trends क्या रहते हैं, especially when they are that close to the top 4, they are in the top 4. अब आगे Chelsea क्या करेंगे? So I think Hassan has said this many times that Enzo Maresca is that guy that every time you tell him his team are favorites, he's like, nope, definitely not. I think he has to let go of that tag, forget about being favorites, and add consistency to their results. There's just Chelsea's season is littered with losing games that they should not have lost, which would have put them in a better position. If he can get his team to Or play... in this case, drawing games. Or drawing I mean, games, exactly. that's So gonna hurt अगर them. ये आप देख लें, Chelsea realistically are probably thinking they're 9, maybe 10 points off of where they should have been when you consider the quality that they possess. Going forward for Maresca, more than the tactics, more than the personnel, the message has to be consistency. Let's go on a run. Let's win 3, 4, 5 games in a row. Pura season badal jata hai. If they keep doing this, you know, 1 step forward, 2 steps back, Liverpool eventually are going to find a way to fix their issues. They're already looking a better side for it. Suddenly then Rohaji, 2 से 3 games में आपके 3 points हैं, उनके 9 points हैं, वो equal points जो हैं वो 6 point का gap बन जाता है. Chelsea have to be very wary of that. They don't want to fall away. Villa are not looking like they're about to drop points anytime soon, and Arsenal and Manchester City are not even in that conversation of 3rd and 4th right now. So Chelsea पे pressure है, but they have the personnel. They have a lot of talent in their side. They have some incredible players. They really need to be thinking about adding consistency, going on a run, 5-6 game, you know, winning streak, and that'll give them a lot of That confidence. will be a going. statement, and I Yeah, think that's yeah. what they need right now. Let's move on to our next result. Aston Villa against United 2-1 से जी विला ने ये मैच अपने नाम किया है. विला इस वक्त वो साइड बनी हुई हैं जो कि जिनको बाकी सारी टीम्स, स्पेशली जो टॉप 4, टॉप 5 टीम्स है, बहुत ही एनवियस निगाहों से देख रहे हैं, और थोड़ी क्यूरियोसिटी भी है, थोड़ी एनवी भी है, थोड़ी कंफ्यूजन भी है कि ये क्या हो रहा है और ये थ्रेट जो है इसको कैसे टैकल किया जाए. यू मेंशन्ड कि ये कितना डेंजरस और कितना डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग ग्राउंड है टू प्ले एट, ये वेन्यू विला पार्क जो है. बट अगेन यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से आप बात करें, व्हाट हैपेंड इन दिस गेम 2-1? आई थिंक पहले तो इस मैच को मैं कहना चाहिए मॉर्गन रॉजर्स 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड 1 क्योंकि वरना तो बाकी 10 प्लेयरों के खिलाफ यूनाइटेड जीत रहा था. तो मॉर्गन रॉजर्स लिटरली स्टेप्ड अप आउट ऑफ द ब्लू एंड ही स्कोर्ड दोज वंडर गोल्स. And this is not the first time he's done that. He's done that several times for Aston Villa. I think it's probably his best season of the year. उसके अलावा यूनाइटेड डोमिनेट कर रहा था इस गेम को. आप पोजेशन के स्टैट्स देख लीजिए, आप चांस क्रिएशन देख लीजिए, हार्डली ऑली वॉटकिंस के पास कोई चांस है. इवन विल सी द गोल इवन विला गेट टू स्कोर इज एक लॉन्ग बॉल से वो बॉल कंट्रोल करते हैं लेफ्ट विंग पे, एंड देन ही कट्स बैक इन एंड स्कोर्स दैट गोल. तो आई थिंक ओवरऑल यूनाइटेड विल बी वेरी अपसेट ऑन द फैक्ट कि आप इतना डोमिनेट करके आपने वो चांसेस क्लियर कट उस तरह नहीं बनाए. इवन दो कुनिया को भी एंड पे चांस मिला, कुड हैव लेवल्ड दैट गेम. लेकिन आप जब पोजेशन इतनी डोमिनेट कर रहे हो तो देयर हैज टू बी एन रिजल्ट ऑफ दैट. इट हैज टू ट्रांसलेट इनटू समथिंग बिगर. एंड गोइंग इनटू दिस गेम बिफोर यूनाइटेड आई थिंक सेकंड सबसे ज़्यादा गोल्स किए हैं सीजन में. सो दैट्स गोइंग फॉर यू. आपने स्ट्राइकर्स में इन्वेस्ट किया, उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट डिफेंसिवली अभी भी वो फ्रेलिटीज हैं. खास तौर पे यंगस्टर्स लाइक हेवन, लेनी योरो, दे आर ग्रेट one-on-one players, but when it comes to defensive solidity और positioning as a team, they are lacking. वो अभी पता लगता है. और इसी गोल की हम बात कर रहे थे कि लेनी योरो भी इस इतने आसान, जिस तरह गर्म छुरी जो है वो मक्खन के अंदर से गुजरती है, ऐसे ही गुजरे हैं रॉजर्स भी डिफेंस के अंदर से. What और an analogy. ये गोल भी ऐसे ही हुआ. Okay, where to begin? I think Hassan has summed up most of it so well. The problem for United is हमने यही बात की, second highest scorers, but they're also the team that's conceded the third Conceding most a goals lot, exactly. in the league. अब आप देखें कि United के पास, other than this Cunha goal, which was a lot of good work by Dorgu, but United had up till that point as many as 3 or 4 good opportunities, better opportunities than Villa had. We saw Šeško miss a goal, we saw Cunha go close. If you're not making those count against a team like this, which is on a 6-match winning run, 1 से 2 साल पहले हमने देखा था कि we'll just get to this one again where Dalo and Euro might as well be sleeping. It feels like United are playing with 9 men. We talk about Spurs. Almost a carbon Carbon copy of the first goal. 2 साल पहले
Aston Villa were on their best run. Manchester United came to Villa Park, found a way to win that game, and Villa's season started unraveling a bit. Manchester United have won more games at Villa Park. Villa, I think, for only the second time, have beaten United at home. The problem remains, Rohaji, कि while Villa are trusting their system and their personnel, और हम वही बात कर रहे थे, आप भी कह रही थी कि teams are looking with envy and with suspicion because this is not an incredible Villa squad. It's a good squad, but they don't have too much depth. And when their main players like Watkins and all are not delivering, others are stepping up. United have 285 million plus of attacking talent and are relying on, guys like a defender coming back after 9 months of injury to come in midfield, take chances. This is the 7th consecutive time Manchester United have started Manuel Ugarte in a game and lost. Manchester United are on track to end the calendar year with 14 league wins out of 38 games. It's not acceptable. But again, हम United की analysis कर तो रहे हैं, but it seems like कोई आसान solution या कोई आसान एक बहुत आसान कुछ समझ में आ रही है, कुछ खास कोई रोड मैप नहीं नजर आ रहा. आपने बात की ऑफ कोर्स अटैक किया, अगर आप उनकी गोल स्कोरिंग की बात करें, इट्स नॉट दैट दैट डिपार्टमेंट इज टेरिबल. आई मीन देयर स्कोरिंग कंसिस्टेंटली, बट अगेन उनका जो डिफेंसिव साइड है जहाँ पे वो बार बार एक तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, फिर वो क्लोज नहीं हो रही, फिर वो कंसीड भी कर रहे हैं. अब आगे बढ़ने के लिए यूनाइटेड क्या करेंगे एट दिस point in the league, in this point in this season? What's the solution? How do they move forward now? I think that's one of the toughest questions they have to answer because आपके 3 मेजर प्लेयर जो हैं वो AFCON में चले गए, आपके टॉप स्कोरर महमूद भी चले गए, डियालो भी चले गए, माचुराई भी चले गए, फिर अभी ब्रूनो को लगा इंजरी हुई. तो आपने आपके बेंच स्ट्रेंथ की हम इस शो में बार बार बात करते रहे हैं, आपके बेंच में कौन था आगे जो गोल कर सकता? ओनली ज़र्क्सी. And then you had 2 debutants, one of them 18-year-old, जो academy product आपको लाना पड़ा, instead of somebody like a Bruno Fernandes, जो इस मैच से पहले तक जितने यूनाइटेड ने गोल किए हैं, 4 के अलावा या उन्होंने वो गोल किए या असिस्ट किए. तो how can you take that man out of this team and then think we're gonna go on to score goals? फिर आपके लिए मुश्किल होएगा. और आपको एक चीज बहुत क्लियर कट रियलाइज हुई है, जो कुरैशी साहब भी शुरू से बात कर रहे थे इस सीजन के, कि यूनाइटेड मिडफील्ड में थिन है, उन्हें और ऑप्शंस वहां पे चाहिए. अगर कोबी मेनू या अदर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, पीपल लाइक ब्रूनो, दे गेट अ निगल, देन यू डोंट हैव समबडी ड्राइविंग दैट मिडफील्ड. और आपकी फॉर्मेशन बनी ऐसी हुई है कि वो इंजन है इस फॉर्मेशन का. इफ दोज मिडफील्डर्स डोंट वर्क, एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट. यूनाइटेड इट्स रेयर रोहा जी, क्योंकि अब एक ट्रेंड चेंज होता हमने देखा है कि समर में मेजर स्पेंडिंग होती है. पहले क्रेजी विंटर स्पेंडिंग हुआ करती थी, 4-5 साल पहले तक क्रेजी विंटर स्पेंडिंग, लास्ट डे डील्स हो रही हैं, there's so much movement going on. Some of the best buys in the Premier League actually have would been happen done. during this Vidic, period. Suarez. Yeah, exactly. So that's a many. great point that you've made. अब हम थोड़ा सा क्योंकि आगे बढ़ना चाहते हैं, लीग की स्टैंडिंग्स को एक दफ़ा देख लें, एक दफ़ा गो थ्रू भी कर लें. एंड ऑफ कोर्स वी नाउ नो कि बहुत ही नेक टू नेक जा रहा है. देयर ओनली 2 points separating Arsenal and Man City at the top. So 39 points. The Gunners are sitting up there securely, but cautiously, क्योंकि City are right behind them with 37 points. Aston Villa, the side that everybody was saying, well, कितनी दूर तक जाएंगे, कितनी देर तक रहेंगे वो इस पोजीशन में. I think it's very exciting what Villa are doing right now. And उसके बाद of course Chelsea are there, Liverpool are there, they're tied. So moving forward, Abhi, how much more of a competition is this going to shape up? और Arsenal और City की अगर हम खास तौर पे बात करें, कितना neck to neck मज़ीद ये हो सकता है? और do you think कि एक गेम की देर है and Arsenal will drop points? देखिए, always एक गेम की देर तो होती है, but in recent years we've seen एक गेम की देर है. City might also have a bad run. Arsenal will be confident of that. Just a year ago, we were talking about when City went through a bad run. The most incredible thing would be if somehow Arsenal and City both lose their games and Villa win. Villa could go top. It's 3 point का Wouldn't फर्क that है. be It something? would just be incredible for the league. And then हम देखें कि I think Arsenal and City will stay neck to neck. How far can Villa push them? The question remains. Can Villa make signings in January, strengthen their squad? Attack City will make signings. I think Arsenal have already too good of a squad, but they have the
ability to make signings. Is that the only thing keeping Villa from being an actual serious title contender? कि yeah, उनकी yeah. squad की depth उतनी strong नहीं है. Yeah. This part is still pretty much तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा fixable issue है ये. हाँ, I think as the boxing saying goes, pound for pound Aston Villa और City का कोई मुकाबला नहीं है. ठीक है, लेकिन और even Arsenal का, लेकिन Aston Villa the way they're outperforming themselves right now, I think it's a beautiful narrative for the league itself. जिस तरह आपने कहा कि Aston Villa अगर City के पीछे रहता है and they keep pushing them, Arsenal पे तो pressure है ही, वो pressure City पे भी translate होगा. बिल्कुल Any है. side who's looking over their shoulder will have pressure कि यार मैंने points drop किए तो they can come up. I think it's good for the league as well. Aston Villa at the end of the season, if they finish in that top four anywhere, they'll be happy with themselves. And I think if they do that, they might actually be able to keep people like Morgan Rogers at the club. Because currently, जिस तरह के कुछ उनके players perform कर रहे हैं, all the sides are looking at them and they want to buy them away. Or everything is summed up by the celebration of Unai Emery when that second goal goes in. इतनी ठंड में जैकेट उतार के फेंकना. It's not easy. It tells you how much hyped he was for अच्छा, that we goal. talked about the top four, but ये थोड़ा सा middle of the table भी एक game यहाँ पे अलग से अपनी चल रही है. Sunderland, United, Crystal Palace, यहाँ पे भी अभी action है. ये कुरैशी साहब अब आप बताएं कि हम क्या surprise अब expect कर सकते हैं, कौन सी team is going to give us that shock. Are we talking good surprises or bad surprises? Shock का word मैंने इसलिए use किया है कि नहीं, कुछ it's भी no हो longer- सकता है. it's It can no- be it's- either it's- positive or it's- negative. It's no longer a shock. अब इतने shocks लग चुके हैं कि कुछ बचा ही नहीं है, चलिए surprise element circuit कह short दें. हो गया है. I think the most incredible thing again would be like we're talking about the fact that if Chelsea, Liverpool and Sunderland all find a way to lose and Manchester United win and go out to fourth. हर वक्त आपने इतना मैथ किया होता है या देखें, सिनेरियोज my बनाए mother होते used हैं. to always wonder why I watch so much football, and I used to tell her it'll one day really help me out with my studies. It didn't then, but today it is. The point is, I think geography and math are two things that watching Premier League football has really helped me with. But वही बात है, आप इतने close हैं. अगर Chelsea का एक बुरा result आता है, Liverpool का नहीं आता, United, Palace, and going all the way to Brighton. A win can take any of those teams to within 1 or 2 points or level on points. Right. We're talking about teams that are 7th, 8th, 9th, 10th. That's how close the league has been this year. Hassan, वही बात कर रहे थे कि it's about this, why teams get so stressed like Newcastle is because league में इतनी competition है. Every game has something riding on it other than Wolves games. Absolutely. I think bottom teams के ऊपर भी अब एक नजर डालते हैं. We have talked about the danger zone, the relegation zone. We talked about West Ham and how grim things look for this club right now. But हमने Burnley और Wolves के बारे में बात भी नहीं की. Nottingham Forest जिनका last season जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त गया था. इस season जो है they're sitting very very close to the danger zone. Hassan, what do you have to say on how these clubs will be looking at their next upcoming fixtures? I think with the Wolves, it's done for them. ये हो ही नहीं सकता कि यहाँ से वापस आएं because जो ये एक record है 17 games के बाद 2 points आपके it almost feels impossible for them to even score these many points out of 17 games, let alone come out of this rut and somehow make it away from that relegation zone. As far as Burnley are concerned, I think it's going to be tough for Burnley as well. West Ham, 10 losses and so many losses on the trot. And I think the most frustrating part for West Ham is कि कितने matches ऐसे थे कि जहाँ पे उन्होंने अच्छा perform किया. They could have gotten points, but they just couldn't finish that off. और उनके ही हम साए Nottingham Forest. अब मसला दोनों में ये है कि वही मैनेजर इधर आए Nottingham Forest से लड़ाई करके, तो उनका दिल होगा किसी तरह मैं ऊपर चला जाऊं और इसको मैं नीचे खींच लूं. So I think that battle's gonna brew for longer. Leeds again looks good at times and looks really bad at times. But I think out of the 3 clubs, Burnley, Wolves are done. Nottingham Forest and West Ham, I think it's either of those two which will be going And down. Rohaji, we just have to talk about the fact that Nottingham Forest have played 16 games and they are on 18 points. Tottenham have played 17 games around 22 points. Nottingham Forest win their game. They're 1 point behind Tottenham. Continue your current run. There is nothing to suggest, if this current run continues, that Tottenham may not find themselves in the position where Nottingham Forest are right now. After, like Hassan spoke about where they were in October and having won the Europa League and having come into within 2 minutes of beating Paris Saint-Germain to win the Super Cup, to have a new manager and to possibly be
17th or 18th, the only team having a worse season than Manchester United somehow is Tottenham Hotspur. It's got to be worrying them. They need the wins to move them. Abhi bhi wo out of that equation nahi hai. A good 2, 3, 4 game winning run could get them closer to the top 6 again. That's how the league is going. But equally, a bad run could bring them closer to the bottom. Just on that very dangerous brink right now, so anything could happen. But again, exciting times ahead for the teams that are in that top 4, top 5 region. Gentlemen, thank you so much for your time and analysis. And आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया for watching Sports Tonight. अपना बहुत ख्याल रखें. We will be back next week with more. Take care. Good night.